Yes, sir, we welcome you back. Sir, kindly unmute yourself. Yeah, yeah. Which one? This is the one. Yes. So is it okay now? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Okay. Okay. So we just talked about patents, and we know that the patent, the shelf life or the validity is for 20 years. Okay. Now, what I feel is myself in a way like any scientist, if he or she thinks that she would like to protect her invention for more than 20 years, can legally he or she do it? So the answer is yes, you can protect your invention permanently, and this is what is called as trade secret. Okay. So in a trade secret, you have your technology with yourself only. You do not file any application with the government. Okay. You do not want it in the public domain. So what you do is you keep your recipe or keep your process technology written down, and you keep it at a very safe place in safe deposit. Normally people keep it in a safe deposit in the banks. Okay. ये क्या गड़बड़ है देखो जरा please enter your name. So, I don't know what happened. अपने अभी चला गया कुछ. So no, sorry, this one. Got it. Maximize is here. Huh. Huh. So sorry for this. You can see my slide. Yes, sir. Okay. So I was talking about the trade secret. So this is something which is very simple. The only thing is if your secret, somebody by doing some reverse engineering or by some mechanism, okay, which is legally possible, any scientist comes up with that formula, like the Coca-Cola drink. This is a trade secret. So it's been there for a number of decades, maybe close to a century. This recipe, nobody has been able to make Coca-Cola. Okay, we know each and every ingredient what is present. So science has advanced so much, but what is the percentage? What was the sequence of adding these things? तो अभी तक किसी ने भी कोको कोला का जो रेसिपी जो है ड्रिंक की किसी के पास नहीं है अभी तक. Okay, but if any scientist comes out with the technology कि मैंने भी कोको कोला बना ली है, then legally he is allowed to sell that. Okay, कि उसने बस ट्रेड सीक्रेट जो था चुराया नहीं है, which is immoral, but उसने अपना दिमाग लगा के उसने बना लिया. So his recipe may be the same or may be different, but the taste is the same, color is the same. So he can sell that. Okay, he has the right. So trade secret का ये drawback ही है कि by reverse engineering most of the products can be made. So Coca-Cola is one such example. The spices which are used in the Kentucky Fried Chicken वो भी trade secret है. Google search algorithms, Google के अंदर हम whatever information we want, we get in fraction of a second. So उनके जो algorithms हैं, जो सारा जो programming है, that is also a trade secret. So these are some other examples. Okay. So yes, if you have some invention, you can keep it as a trade secret. But if somebody can make that product or find out the process legally, so then he is allowed to sell that, commercialize that also. This is the only disadvantage trade secret के अंदर.
So we can skip this slide. Now the third category is trademark. Suppose you go to a shop and you have these two bottles, water bottle, mineral water bottles. There is no label and this is one with a Bisleri. So which one you will buy? I think 10 out of 10 will go for this Bisleri thing. Okay? Because we know Bisleri is a good brand name, quality है इसके अंदर, whereas we have no idea कि भाई ये किस कंपनी ने बनाया है, कैसे बनाया है. Okay? It may be cheaper. Maybe it is for 20 rupees, this may be for 25 rupees. So we'll prefer this thing. Okay? So this जो trademark जो मैं बता रहा हूं आपको कि this is what it is. कि जो trademark के अंदर जो आपका trademark, let us identify the goods made or services offered by a company or an individual. Okay? तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो बॉटल है ये बिस्लेरी कंपनी की है, दिस इज अ गुड ब्रांड नेम. सिमिलरली टाटा का कोई प्रोडक्ट हो, यस वी हैव फेथ इन टाटा प्रोडक्ट्स. आई डोंट वांट टू नेम अदर्स, आई डोंट वांट टू बायस. हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी का हो, वी माइट फील कि यार ये तो बड़े इंफीरियर क्वालिटी का हो सकता है ये प्रोडक्ट. तो ए ट्रेडमार्क कैन बी ए जनरल वर्ड लाइक एन एप्पल. एप्पल वॉच है, एप्पल मोबाइल्स है आपके, एप्पल आपका ये क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं. सो जैगुआर इज द नेम ऑफ ए कार. डिस्टिंक्टिव वर्ड फोर्ड, हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स जो है, मर्सिडीज जो आपका ऑटोमोबाइल है, दीज आर डिस्टिंक्टिव वर्ड. साउंड कैन ऑल्सो बी ए ट्रेडमार्क. से फॉर एग्जाम्पल एमजीएम जो पिक्चर्स बनाते हैं, सो एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी सो ये लोगो आता है, साथ में देयर इज ए roar of a lion. That's a sound. It's a trademark. Trademark can be a numeral, number भी हो सकता है, 4711. Perfume. This is a perfume which is quite common in France. It's a cologne. Color. You can have any set of colors. जैसे Pepsi के अंदर है. It can be a symbol. Mercedes की कार पे almost every car company का अपना एक symbol है. Pictures like an alligator, Lacoste के clothes हमें सबको मालूम है. It can be a slogan. Slogan can be a trademark, like Nike का Just Do It, Amul का The Taste of India, or it can be a combination of these. इन सब से बन सकता है. ये सब trademark के examples हैं. Next category is industrial designs. It protects the industrial design is the external shape, configuration, surface pattern of an industrially reproduced article. ये बॉटल है जो कोको कोला की बॉटल की शेप जो है ये इट इज आईपी प्रोटेक्टेड. ओके, कोई और कंपनी ऐसी शेप नहीं बना सकती. सिमिलरली मोबाइल है, इसमें 3 कैमरास लगे हुए जैसे लगे हुए हैं, साइज वगैरह और कोई कंपनी नहीं बना सकती. लुक एट द डोर हैंडल, लैपटॉप स्टैंड, यूनिक टेबल, डिजाइन ऑफ द कार, ये बीटल कार है आपकी. ओके, सो दीज आर योर डिजाइन्स. डिजाइन्स की एक स्पेशलिटी क्या होती है, दे आर नॉन फंक्शनल. इनसे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, इट इज ओनली फॉर द अपीयरेंस. नेक्स्ट कैटेगरी इज योर कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड. दिस आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कंसंट्रेट, स्पेशली द फैकल्टी मेंबर्स. Rights given by the law to the creators of work in the field of literature, computer software, they comprise your copyrights. In related rights, what you have is dramatics, sound recordings, film, video recordings, artistic, musical. These are related rights. I'll just give you a few examples of this. In literature, it can either be writing books, writing research articles, किसी student ने कोई ऐसे लिखा है, their recipes, even delivering a lecture in a class or to the public, they all become part of your literature. Computer software में you get the computer program, software and databases. Related rights के अंदर you can have drawings, artistic examples, drawings, paintings. जिसने पेंटिंग बनाई है तो he has a copyright. जिसने ड्राइंग बनाई है, जिसने फोटोग्राफ खींची है, आर्किटेक्चर, engravings, craftsmanship. So ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये कम अंडर आर्टिस्ट रिलेटेड राइट्स के अंदर आ रही हैं. Then you have the dramatics, dramas जो प्ले होते हैं, रामलीला, for example, Romeo and Juliet, screenplays,
जो कि लिखे जाते हैं ऑन पेपर कि भी ड्रामा कैसे एग्जीक्यूट होगा, ड्रेसेस कैसी हैं, डिस्टेंस कितना होगा, क्या साउंड होगी, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन द स्क्रीन प्ले। म्यूजिकल जो है आपकी म्यूजिकल नोटेशंस हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, cinematographic films, sound recordings, okay, so they all become part of the related rights. दो, अब इनने जो राइट्स आपको प्रोवाइड किया, द एक्ट प्रोवाइड्स बंडल ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सपोज यू हैव रिटन ए बुक, ओके, आपने उसकी 100 कॉपीज बनाई हैं, यू कैन हैव अनदर 1000 कॉपीज, यू कैन रिप्रोड्यूस इट, मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। Translation of the work, so you have written something in English, so you can translate into Hindi, Punjabi, in any language. Adaptation, so whatever you have written in a book, that can be adapted for a drama, for a film, किसी टीवी प्रोग्राम्स, किसी के लिए adapt कर सकते हैं आप उसको। Communication to the public, so whatever you have written, उसके ऊपर you can deliver lectures to the public. ये आपके राइट्स हैं उसमें। क्राइटेरिया क्या है कॉपीराइट के लिए? वर्क मस्ट एग्जिस्ट इन सम फिजिकल फॉर्म, टेंजिबल फॉर्म के अंदर आना चाहिए। सो वर्चुअली एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच कैन बी व्यूड और लिसन्ड क्वालिफाइज एज ए कॉपीराइट। जनरली आपने उसको लिखा होता है आपने। The work has to be original in nature. So that is the most important thing. The copyright work has to be expressed by the creator in his own frame of thoughts. The author created it from independent thinking, void of duplication. Okay? You have seen lots of books on Bhagavad Gita, on Bible, on Mahatma Gandhi. इसी चीज के ऊपर भी hundreds of authors have written the same thing. पर वो हर जो बुक है वो it is different. क्यों डिफरेंट है? कि हर एक ने अपने थॉट प्रोसेस से लिखी है। It is not a copy. Okay? So your work may appear similar to already existing works, but should not be the same. It may lack in quality or quantity or aesthetic merit. It will still pass the test of copyrightable. जो भी आपने लिखा है, चाहे अच्छा लिखा है, चाहे बुरा लिखा है, उसमें कोई aesthetic sense है या नहीं है, that is a copyright. The work has to be creative. The work must show at least some creative effort on the part of the author. There is no minimal limit for the extent of creativeness. It is a subjective matter. अब say for example, mere changing the dimensions of a book will not be granted copyright. कि अगर मेरी कोई बुक थी 10 inches by 6 inches की लिखी है, मैंने उसको 8 inches by 10 inches बना दिया, 5 inches बना दिया, so वो creativity नहीं आई इसके अंदर. Okay? So ऐसे लगना चाहिए कि yes, you applied your mind और reasonable mind आपने लगाया इसके अंदर. Now this is also very important. Copyright registration. It is not necessary to register a work to claim copyright. आपको पेटेंट की तरह, किसी ट्रेडमार्क्स की तरह, उसकी तरह, इंडस्ट्रियल डिजाइन की तरह आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है. It is not necessary to register a form. Once a work is created, it receives an automatic copyright safety. क्या मतलब? जैसे ही आपने कोई सेंटेंसेस लिख दिए, बाय डिफॉल्ट उसी समय ही आपकी जो है आपका उसका राइट बन जाता है. कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट्स. आपने अगर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लोग, मगर उसको कोई एडिशनल राइट्स नहीं मिलते उस चीज के लिए. इट इज मियरली प्रूफ ऑफ एंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क इन कॉपीराइट रजिस्टर. Now the point is कि अगर हमें कॉपीराइट रजिस्टर करने का कोई एडवांटेज नहीं है राइट्स में, तो वैसे ही जब हमें मिल जाते हैं इवन जस्ट बाय राइटिंग, तो व्हाई शुड बी रजिस्टर इट? वो तब फायदा होता है अगर somebody कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाए. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सर्व एज ए प्राइमा फेसी एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. प्राइमा फेसी मींस बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. कि बाय चांस यू हैव रिटन एन आर्टिकल, ओके, एंड somebody says, आपने लिखा, आपने कहा कि मेरे पास कॉपीराइट्स हैं, बट somebody says कि भी एग्जैक्टली मैंने पहले लिखा था इससे पहले, ओके, डिस्प्यूट तो क्रिएट हो गई ना. सो दैट टाइम अगर आपने लिखा है और रजिस्टर करवा दिया उसको, सो देन यू हैव ए लीगल प्रूफ कि भी ये तो अभी क्लेम कर रहा है, पर मैंने तो 2 महीने पहले लिखा था, 2 साल पहले लिखी थी ये चीज, एग्जैक्टली, राइट.
So that is the advantage of registration. This is the copyright symbol C, जो हम normally use करते हैं, but you don't have to write a symbol to see to it that it's a copyright material. Even not putting C, it is a copyright material. Now, what are the rights which are associated with copyrights? Economic rights are which are your for commercial gains. जो भी आपका copyright है, you can give it to publisher, publish कर सकते हो, पैसे ले सकते हो. I mean, you can put it in the internet direct. आप किसी को sell कर सकते हो. So that is your commercial. But the ones which I want to refer to is the moral rights. They are associated with the copyrights only. Right of paternity. Even if the copyright has been licensed to another party, say example to a publisher, the original author of the work retains the right to claim the authorship of the work. Suppose आपने कोई novel लिखा है, कोई book लिखी है, आपने publisher को दे दी. तो publisher is the owner, but वो आपको authorship से नहीं हटा सकता. Authorship आपकी ही रहेगी उसके अंदर. Okay? For example, an author has a right to have their name on the cover of their book, even if they have assigned copyright to someone else. This is right of paternity, also called a right of attribution. Another right is which is known as right of integrity. The original author has a right to prevent misuse of the work, alteration, addition, deletion in the work resulting in misrepresentation of the said work. क्या कह रहे हैं कि जब आपने rights ओनर उसको दे दी, पब्लिशर को दे दी आपने rights, तो वो उसके बाद आप में फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं चेंज कर सकते उसके अंदर, बिकॉज यू आर नो मोर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. उसके रिटर्न उसने आपको फाइनेंशियली आपको पे कर दिया. सो अब वो उसको ऑल्टर कर सकता है. ओके, बट वो ऑल्टर इतना ही कर सकता है कि भी जो आपकी सेंस है उसके कहने की वो गलत ना हो जाए. से फॉर एग्जाम्पल अगर गुलजार जो अपने पोइम्स लिखता है, गजल लिखता है, तो ही सेल्स इट टू ए पब्लिशर, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स चेंज कर दे कि जो उसका मीनिंग था उसका मीनिंग चेंज हो जाए. आजकल गानों के अंदर डबल मीनिंग बड़ा होने लग गया बेटे, राइट. सो वो चीज नहीं वो कर सकता. जो गुलजार जी कहना चाहते हैं वही रहेगा, राइट. ही में चेंज द वर्ड, गुड लिखा है, गुड की जगह कुछ बेटर लिख दे, वर्ड कुछ और लिख दे. सो दैट ही कैन डू. इससे ज्यादा नहीं कर सकता. सेंस जो है इट शुड रिमेन द सेम. ओके. So copyright work, exceptions to copyrights, इसको fair use doctrine कहते हैं. copyrights के अंदर copyright work for personal use is allowed, studies, teaching and research. Okay, so bona fide religious ceremonies के अंदर भी जो गाने वगैरह होते हैं, so आप it is allowed now. Public libraries हैं, वो जो कोई book है जो available नहीं है इंडिया के अंदर, उसकी 3 copies बना के रखते हैं अपने पास. Now, this is also very important these days, internet and copyrights. We are living in a digital world. Data can be transmitted worldwide in a fraction of a second. The data which you receive through internet or download from your computer may be copyright material. आप बड़ी जल्दी से कर लेते हैं और उसको फिर आगे ट्रांसमिट कर देते हैं ना. As a matter of fact, legally it is not allowed. You can download only for your purpose. आपने कुछ पढ़ना है आप से, पर आप आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते. One can use such material for personal use but cannot be used for commercial purpose. Okay? So इस चीज का आपको ख्याल रखना कि जितना भी मटेरियल वहां पड़ा हुआ है, so most of it is copyright material है जो, तो आपको ध्यान से यूज करना है. Now transfer of copyrights जो मैं बात कर रहा था आपने कि आप जो है कि आपने कुछ आर्टिकल्स लिखा and you sell it to publisher. Okay? So usually authors transfer their rights to publishers for financial benefits. But transferring copyrights unconditionally to the publishers may have some repercussions for the owner. क्या चीज है? Publishers may prevent scientists to display their article on the institute's website. आपने कोई बुक लिखी, मैं अब वो बुक के उसको जो मैंने पब्लिशर को दे दी, तो मैं अब बुक को कहीं डिस्प्ले भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है. Also, publisher may not even allow the author to revise their work. तो अब आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? We normally हम बस सोचते नहीं है कि दिमाग में है कि वो हमने पब्लिशर को देना है. No, not at all.
पब्लिशर को दे दो कि हार्ड कॉपी आपके पास है, सॉफ्ट कॉपी, आज का डिजिटल का जमाना है, ये मेरा राइट्स है, वो नहीं मैं देती आपको। ओके, सो एन एग्रीमेंट में बी साइन परमिटिंग ओनली a print and sale of hard copies by the publisher while retaining digital rights. Author may also put time limit for the printing and sale of the books. आप उससे ये भी बात कर सकते हो कि जो जितनी कॉपीज तुमने एक साल के लिए सब कुछ दे रहा, एक साल के बाद जो होगा वो उसमें मेरा शेयर होगा। ओके, सो आप उससे बार्गेन कर सकते हो कि भाई 1000 कॉपीज पहले आपकी हैं, उसकी पब्लिशर की, उसके बाद की जो है उसमें इतना शेयर मेरा होगा। सो वी कैन हैव ए डायलॉग विद द पब्लिशर्स। ओके, सो हमेशा ये ना सोचो कि भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अब ऑप्शंस नहीं है, वी हैव ऑप्शंस, बट हमें उसके बारे में मालूम नहीं। सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द कॉपीराइट्स। जो ये लाइक आई टोल्ड यू, कॉपीराइट्स में क्या है कि फोटोग्राफर जो है ही इज द राइट्स फोटोग्राफर के पास होते हैं जो फोटो क्लिक करता है। बट इन 2011 व्हाट हैपेंड, a photographer, UK-based photographer David Slater put his camera on tripod in the wildlife sanctuary to click the photograph of monkeys. इसके फोटो खींचने के लिए लगा, पर इस मंकी ने क्या किया कि भी उसका ट्राइपॉड पे जाके बाई चांस उसने प्रेस किया, बटन क्लिक हो गया, फोटो खींच गई। तो अब ये था कि भी अब ये राइट्स किसके हो गए, मंकी के हो गए राइट्स, राइट। सो दिस केस वेंट टू द कोर्ट। So final decision जो settlement हुई, photographer will hold the copyright of the picture, but the photographer will pay 25% of the royalty share with the wildlife sanctuary where the monkey lives. Okay, so कई बार बस ऐसी भी चीजें आ जाती हैं which are quite interesting. So far what we talked about is कि जो भी हमने IP मिलेगा तो हमें that information should not be in the public domain, right? तो अभी तक मैंने आपको यही बताया है। Now can IP be granted to novel products or processes which are in the public domain? अब मैं कुछ उल्टा ही कह रहा हूं कि कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, क्या हमें उसके ऊपर IP मिल सकता है? The answer is yes. Okay? अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी, आयुर्वेद मेडिसिन, वो तो सारा डोमेन तो ऑलरेडी पब्लिक में पड़ा ही हुआ है, राइट। फुलकारी है, इसके बारे में तो ऑलरेडी लोगों को पता ही हुआ है। दार्जिलिंग टी है, ओके, मैसूर सिल्क है, ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी चली आ रही हैं। तो इसके अंदर आईपी में कैसे जनरेट होता है और क्यों जनरेट किया जाता है? आईपी आइटम्स ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। क्या चीजें? आयुर्वेद मेडिसिन हैं, पश्मीना शॉल, फुलकारी, बंगाली रसगुल्ला, बासमती राइस, भारतीय नाट्यम, भांगड़ा, गिद्धा, ये सब चीजें जो हैं, प्लेस, these things have been created with some intellect, skill and perseverance, information passed on from generation to generation चली आ रही है, नहीं? तो इनके अंदर जब दिमाग लगा है तो ये सब चीजें हैं। तो डर ये है कि भाई ये चीजें पब्लिक डोमेन में इसलिए ना इसके लिए पेटेंट कर सकते हैं ना कॉपीराइट, तो फिर हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें जिन लोगों ने, जो ट्राइब्स वगैरह यूज कर रहे हैं ये काम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भी इनको भी आईपी का दर्जा दे दिया कि दीज आर आल्सो आईपी। इसमें प्राइमरली क्या कि दे आर प्रोटेक्टेड कि भी इसको गवर्नमेंट की परमिशन के बिना या जो लोग ये चीजें बनाते हैं उनके परमिशन के बिना कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मे बी इंडिविजुअल, मे बी ए कंपनी। ओके, सो आईपी से ये प्रोटेक्शन मिल गया कि और कोई यूज नहीं कर सकता विदाउट देयर कंसेंट। ओके, अब इनको लीगली प्रोटेक्शन देने के लिए एक सिस्टम कहा जाता है स्यू जेनेरिस सिस्टम। ये चीजें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हो सकता है सिर्फ इंडिया में, बाकी किसी कंट्री में ना हो। बासमती राइस है, ये तो हमारे रीजन में ग्रो होता है, किसी और रीजन में ग्रो करेंगे उसकी क्वालिटी नहीं आती। सो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वाइपो कहा जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि हर कंट्री इज अलाउड टू गो फॉर ए सुई जेनेरिस सिस्टम जिसके अंदर लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। अब सुई जेनेरिस का क्या मतलब है? सुई जेनेरिस इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब है ऑफ इट्स ओन काइंड, इट्स यूनिक,
distinctive, alone, peculiar. Okay? So sui generis denotes an independent legal classification. कि उसके लिए उस गवर्नमेंट ने कुछ लॉस बनाए हैं which are applicable in that country. So if somebody desires to commercialize these items, जो मैंने पहले बताई हैं आपको, they have to share the profits with the tribes or the government approved organizations. कि अगर किसी ने कोई मेडिसिन यूज करनी है, कोई प्ले है, फोकलोर्स है, उसके ऊपर कोई पिक्चर बनानी है या कोई डांस अपनी मूवी में लेना है, तो उसको जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करने पड़ेंगे. इसमें राइट्स नहीं मिलते आप किसी को, मगर आपको प्रोटेक्शन हो जाती है आईपी की उससे. दैट इज योर सुई जेनेरिस सिस्टम. अब इसके अंदर आता है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज. दिस इज एन एंशिएंट नॉलेज दैट हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. TK is unique to a community and marked as a cultural identity of the community. Ayurveda medicines, Unani medicines, medical formulations, कुछ एग्जाम्पल टर्मेरिक, नीम, जामुन वगैरह, कुछ लोगों ने पेटेंट ले लिए थे अब्रॉड, पर वो इंडिया ने चैलेंज किया एंड सक्सेसफुली वो जो रिवोक हो गए. नॉट ओनली दिस मेडिसिन, फोकलोर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, सेरेमनीज, इसको ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस कहते हैं. ये भी आईपी प्रोटेक्टेड है. जैसे भंगड़ा है, गिद्दा है, डांडिया है, भारतनाट्यम, राजस्थानी डांस, ट्राइबल डांस, तो ये सब भी जो है अब आईपी प्रोटेक्टेड है. कोई भी ऐसे भंगड़ा जो है अपनी मूवीज में ले ले, यहाँ की और बाहर की उसमें, तो या वैसे ही कोई पिक्चर बना ले कि भी कल्चर के ऊपर उसको प्रॉफिट्स हो जाए, कि भी डिफरेंट डांसेस ऑफ इंडिया, है ना. मगर जहाँ की लोकेलिटी, जहां पर ये प्रॉब्लम है, जहाँ एसोसिएशन है हर चीज के लिए, डांडिया के लिए, गिद्दा के लिए, तो आपने उनसे परमिशन लेनी है, उनके साथ बैठ के आप शेयर करोगे प्रॉफिट्स. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. कई चीजें ऐसी होती हैं जो गुड्स एज ओरिजिनेटिंग इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, रीजन, लोकेलिटी ऑफ ए कंट्री, प्रोवाइडेड सम और ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट आर एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. क्या मैं कहना चाह रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर कोई चीज बनती है और वो चीज की वहां की एरिया से, क्लाइमेट से, सॉइल से कोई चीज जुड़ी हुई है वहां के लोगों के. जैसे ये पश्मीना शॉल है. पश्मीना शॉल किस चीज से बनेगी, जो वूल है, वहां की जो बकरियां, भेड़े वगैरह हैं जो कश्मीर में ही है, राइट. तो वो पश्मीना शॉल है. दार्जिलिंग टी है, ये दार्जिलिंग में ही जो ग्रो होती है, ये प्लांट है, वही दार्जिलिंग टी है. अगर दार्जिलिंग के प्लांट आप पंजाब में आके ग्रो कर लो, वो दार्जिलिंग टी नहीं कहलाई जाएगी. क्यों? क्योंकि ये जो चीज बनी है दार्जिलिंग, इसकी जो सॉइल है वो डिफरेंट है, इसका जो क्लाइमेट है, बारिश है, टेम्परेचर है, वो डिफरेंट है. सो वो वही पाया जाता है. सिमिलरली कश्मीरी सैफरन, ब्लैक राइस जो असम साइड पे होते हैं, मैसूर सिल्क, नागा मिर्च नागालैंड में होती है. सो अगर आप इसको चंडीगढ़ में ग्रो कर लोगे तो इट इज नॉट ए नागा मिर्च, उसको नहीं बनाया जाएगा. आजकल बाजार में पश्मीना शॉल नकली बहुत मिलती हैं, है ना. सो वो पश्मीना शॉल नहीं होती, वो तो इंडस्ट्री में बन रही है, नाम ही ले लें, पर वो झूठ है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई इनको टैग दिया हुआ है कि जब ये चीज जिस तरह से बनेगी पश्मीना शॉल, कश्मीर में जहां पर सर्टिफाइड है ये पश्मीना शॉल है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैंप लगा देती है इसके ऊपर, या आपको दुकान को टैग दे देती है, ट्राइब को, कि भाई ये जो है, तो वो जिस बॉक्स में डालते हैं तो बाहर वो लगा देते हैं, थप्पा लगा, स्टैंप लगा देते हैं. ओके. सो ये टैग जब इसके साथ लग जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उस चीज की. एक्चुअल जो है पश्मीना शॉल जो है सस्ती से सस्ती भी आपको 15-20 हजार की मिलेगी, और यहाँ बाजार में 2,000 की मिल जाती है आपको. ओके. तो whenever you go for this, उसको कहते भाई साहब टैग दिखाइए इसका कहां पर है. Okay, so these are geographical indication things. Similarly, plant varieties and farmers' rights क्या है, कि हमारे किसान जो इतने सालों से जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, वो उसके सीड्स प्रोटेक्ट करते हैं. और कई बार क्या होता है कि भी उनकी वहां पर ही जो सीड्स हैं बड़े यूनिक होते हैं, वो कि उसी एनवायरमेंट के लिए बड़ी अच्छी यील्ड देते हैं, राइट. अब क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती. तो अगेन सुई जेनेरिस के अंदर कि भी ये वैरायटी जो है कोई भी इंडस्ट्री जो है नहीं एक्सप्लॉइट कर सकती टिल दे
go for an agreement with the person, with the farmers. ऐसी कुछ प्लांट वेराइटीज के बारे में है. सिमिलरली चिप्स के अंदर जो कि मैंने बताया, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस. अब चिप टेक्नोलॉजी को वैसे इसको पेटेंट क्यों नहीं कर लेते आप, है ना? चिप्स तो नहीं बनते हैं, बट लुक एट इट कि व्हाई दिस इज अंडर sui generis सिस्टम. चिप टेक्नोलॉजी इज बेसिकली मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. छोटे छोटे से आपने देखा वायर्स होंगी, ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह से छोटे छोटे लगे होते हैं इसके अंदर. Companies spend heavily on its R&D to develop novel chips. Hence, cost is very high. But chip technology is very short-lived. जैसे मार्केट में आती है, छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, कॉपी कर लेती हैं और चीप चिप्स बना देती हैं. और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि भी 2-3 साल के बाद ऑब्सोलेट हो जाती है. सो इफ यू गो फॉर ए पेटेंट, पेटेंट को तो ग्रांट करने में ही आपको 10 साल लग जाते हैं, 8, 5, 10 साल इजिली. तब तक वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, है ना? सो 2 रीजंस कि भी आप इसमें चिप टेक्नोलॉजी के अंदर पेटेंट के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो टाइम उसके लिए बहुत लगता है पेटेंट ग्रांट होने में. ओके. सेकेंड इज, जैसे ही नई चीज आती है तो कंपनीज जो है इमीडिएटली कॉपी कर लेती हैं और चीप मटेरियल से बना सकते हैं उस चीज को. तो जो कंपनी ने इतना जो जिसने बनाया R&D पे इतना इन्वेस्ट किया, तो उसको तो चिप की प्राइस ज्यादा रखनी पड़ती है ना? सो बस कंपटीशन के अंदर चीप में आ गया तो वो चीप माल मिलता, ज्यादा बिकता है. तो इन चीजों को दूर करने के लिए sui generis सिस्टम कर दिया कि जिसने बनाया ये उसकी प्रोटेक्शन दे दी उसको कि और ये चिप हम और कहीं नहीं बना सकते, उनके राइट्स नहीं है पर और के बना नहीं सकता. दैट्स व्हाई दिस इज अंडर sui generis systems. So this was in a nutshell about all different types of these IPs. अब जो इनको इंडिया के अंदर जो एजेंसीज हैं जो देखती हैं इनको, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, दिस जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. Plant varieties are under Ministry of Agriculture. This traditional knowledge etc. the Ministry of Science and Technology, Ministry of IIC. ये डील करती हैं इंडिया में. Then कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं like WIPO and TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. क्योंकि अब इतना ज्यादा ट्रेड होने लग गया है और पेटेंट्स जो हैं डिजिटल एरा के अंदर, तो यू कैन फाइल अदर प्लेसेस आल्सो. अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए कि हर कंट्री मिनिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट के जो आईपी के रूल्स हैं रेगुलेशन वो फॉलो करने चाहिए. तो ये जो चीजें, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ये दिस इज इनफैक्ट ट्रिप्स इज ए ट्रीटी, वाइपो इज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये ट्रिप्स जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है और वाइपो आती है अंडर यूनाइटेड नेशंस. तो ये 2 बॉडीज हैं, ये एक ही सारा रेगुलेट करती हैं एट द इंटरनेशनल लेवल. So let's not go into the details of this. Okay. So lastly, what I want to share is, recently I myself along with one of my colleagues, Mamta Bharadwaj, we have written a book, which is a very basic book on intellectual property. So iske andar what we have is history of IP, all categories of IP, national and international organizations, international treaties. And in addition, हमने क्या किया कि इस बुक के अंदर there is a dedicated chapter on education programs. कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं IP कोर्सेज ऑफर करते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. ओके. सो अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो, छोटे 1 हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं. सो दिस वी हैव मेंशन्ड दिस थिंग. तो ये बुक पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने पब्लिश करवाई है एंड ऑल द राइट्स आर विद द पंजाब यूनिवर्सिटी. दिस इज अबाउट 260 पेजेस बुक. इसकी actual cost is 280, but for PU students and faculty, it is only 140 rupees. So in case you are interested, it's in a very simple language. So I mean, probably you can request your principal to have a few copies in your library. I want to mention that I will not be getting even a single penny. Rather, I did not want even a single penny, so इसलिए मैंने सारे rights PU को दे रखे हैं. So whatever is the commercial gain वो सारा PU को जाएगा, मेरे को नहीं आएगा. So I'm not making any publicity for my personal advantage. Okay. So in case you are interested, this is Dr. K.M. Singh is the honorary director. ये address लिखा हुआ मैंने, so you can talk to them. And lastly, thank you very much for this, and sorry for this glitch which happened
this internet off हो गया था जो मेरा. And I must acknowledge Dr. Aditi Chauhan, who is my research assistant at ITR chair. Thank you very much. No worries, sir. I think technical glitch is a part of this digital world, so we all face it somewhere or the other. Okay. Yes, sir. And So I'm open to any queries, any questions, please. yes, sir, absolutely. First of all, thank you, sir, for such an enriching session. And rather, I feel glad to share that this topic of IPR is not far off from the students of commerce, from marketing and legal aspects, because the elements of IPR become the point of distinctiveness and basis for marketing campaigns. And I'm sure the students were able to relate to the subjects which are being taught to them. I'm happy to know that. Yes, moreover, sir, the way you explained in such a simplified manner, it made it all the more understandable with such thought-provoking examples, with special mention to the one you talked about, the photographer and the monkey case. Yes. In fact, I can add Amitabh Bachchan ji, है ना? Amitabh Bachchan, our film star. Yes, sir. इनके father है हरिवंश राय बच्चन जी. Okay. Famous poet. Yes. हरिवंश राय बच्चन जी expired in 2003. Okay, okay. और 2063 में अभी तक तो राइट्स अमिताभ बच्चन जी के पास हैं. 2063 में उनकी डेथ के बाद they would be in the public domain. All right, all right. So what I'm told is कि भी उन्होंने केस किया था कि भी मैं राइट्स मेरे पास ही रहने चाहिए, but बात बनी नहीं. बनी नहीं, okay, sir. So there's so many, but I mean shortage of time. But I would love to deliver an offline lecture. Sure, sir. We would. So मुझे ज़्यादा मजा आता है. Yes, sir. So students are there. So anytime, so I had to just quickly go through the slides. But interesting cases हैं, बहुत ज़्यादा हैं. Okay, sir. We would love to hear them from you. Yes, sir. Now I रसगुल्ला के लिए बड़ी लड़ाई होती है. उड़ीसा कहता है कि हमारा रसगुल्ला है, बंगाल वाले कहते हैं हमारा रसगुल्ला है. Certainly, sir. Anyhow, so thank you very much for having me for this. Yes, Thank sir. you. Students, please go ahead and clarify your doubts if you have any. As well as I mean my colleagues, if you have any question, any query. Yes, anyone has any query? I think the topics were quite relatable. You know, you can always catch these opportunities, and since this is the portal wherein we prepare our students to be technologically efficient. Okay, Shaina, please go ahead. Yes, Shaina, you raised your hand. Please go ahead. Yes, please go ahead. Shaina, kindly unmute. Shaina, you can type in the chat later. Please repeat your question, Shaina, or you may write in the chat box if you have any technical glitch. Shaina ने आप लोग unmute किया हुआ है क्या? So she just unmuted once. Yes, Shaina, you may. She's texting. Oh, she's texting. Okay, all right. Good afternoon, sir. Till Hello. then, on behalf of the students of commerce, I think it would be wonderful if you can just guide our students in case they are planning to start a business. How can they make their logos or their slogans patented and protect their intellectual property? So can you just guide our students quickly on that part as well for our future entrepreneurs? Logos का जो है again there is a department, ये सब चीजें आती हैं under Ministry of Commerce and Industry. There is a dedicated department which is called DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. They are the ones who are looking after all the trademarks. Okay, so we just go to the website और उसके ऊपर everything is available. Okay, how to proceed, how to file an application, how to go about it, what are the different, there is some fee also, just a couple of thousand rupees. So we'll do that, you have to submit there. Okay. Right? Okay, thank you, sir. You just type DPIIT, you'll find everything over there.
Just DPI, it is good enough. GI tags are given by GUI, but are they universally recognizable? Please show on the greening of patents. यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल यस उसमें ऐसा है कि जब पश्मीना शॉल जो है ना बट इट विल बी ओनली मेड इन दैट वेरी रीजन ऑफ कश्मीर जहां पर वो है ओके सो एक्सेप्टेबल इज एज लॉन्ग एज देयर इज ए टैग कि भी उसकी ओरिजिनलिटी है ये दिस इज एन ओरिजिनल थिंग दैट्स ऑल दैट विल टेल यू और उसकी प्राइस ज्यादा होगी. So I don't understand when you say universally recognizable, what does it mean? Yes, GI tag is GI tag, na bas. Please share some light on evergreening of patents. Abhi, it's not coming to my mind. I think what you're saying is evergreening is even after 20 years, sometimes you get an extension. Okay? So you may tweak a little bit, you can go for a new patent. That is just continuing patents karke. So that is, but I won't say that I am totally 100% correct on that. Yes, students, please keep posting the comments alongside and also the queries that you have so that sir can address them. Yes, so anybody else who has any query? Okay, I think students rather were quite clear because as I told you, the presentation was quite Yeah, similar. this is better. I mean, we are teachers, we know that. I don't know why students are hesitant to ask. Yes, sir. So there is never a lecture कि भी ये किसी हमें सारा समझ आ गया. No way, no way. Anyhow, I'll be more than happy if I don't have an answer, I can get back to you. Yes, sir, sure, sir. So now I invite, yes, sir, now I invite Siddharth to kindly extend a word of thanks. Thank you so much, sir. I think our thanks could never be enough in the words, and we are definitely looking forward to offline session with you. And I hope we can organize that. We could really correlate the topic, as Japneet mentioned, with the students of commerce because we do study the legal aspects and the marketing aspects of intellectual property rights. So the topic was not very unknown to us, and we thoroughly enjoyed uh, your um, your guidance in the same regards for the future entrepreneurs as well. So thank you, sir, for your valuable address. I'm sure our students who may be our future marketers as well as entrepreneurs or company secretaries, they have greatly benefited from today's session. We can conclude that in order to avoid troubles for businesses in the future, a preventive legal strategy should be adopted in regards to intellectual property rights. And your insights on innovation development and technology readiness will definitely be instrumental in inculcating research and innovation in our students. As all good things comes to an end in life, so this is this webinar. So on behalf of IIC 4.0 and Meher Chand Mahajan DAV College for Women, I extend a formal vote of thanks to our worthy speaker, Professor Rupinder Tiwari, for today's session. It was a pleasure to have you with us today, sir. We look forward to conducting more online as well as offline sessions with you, sir. Wholeheartedly, I must thank our principal, Dr. Nisha Bhargav, as well for her support and guidance for organizing such an event. I also take this opportunity to thank Dr. Indu Arora ma'am and Dr. Neetu for providing their guidance and support. A special thanks to my organizing team, Dr. Japneet and Ms. Sonali, for their unflinching support and coordination. Thank you, dear students, in the end, for your participation and being such active learners. So, with these words, we come to the end of today's talk. I thank everyone for being part of this and making it a success, actually. Thank you so much. Thank you all of you. Please pay my regards to Nisha ji. Sure, sir. Sure, sir.
Thank you, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Thanks. Students, you can leave the session. I hope all of you have marked your attendance. Thank you for being a good participant. Thank you. Thank you, ma'am.